So it's a good morning from Muscat, Oman. Hi, brightness. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था about me traveling and exploring Oman a little bit. Today is the only day that I can explore Oman and see a few places around. And it's 7:30 in the morning right now. And Muscat, Oman में फ्राइडे और सैटरडे को छुट्टी होता है. मतलब हम यहाँ का फ्राइडे सैटरडे, इंडिया का सैटरडे संडे होता है. So वैसे तो मैंने मस्कट में काफ़ी ट्रैवल किया है. मेरे को पता है यहाँ पे कौन सी जगह है अच्छी देखने के लिए एंड ऑल ऑफ दैट. यहाँ पे मतलब घूमने लायक जगह है, मॉल्स एंड एवरीथिंग. सो जो टैक्सी वाला मुझे एयरपोर्ट से मतलब मस्कट एयरपोर्ट से मेरे घर तक मुझे ड्रॉप किया है, जस्ट हैड got to know him a little bit more. I exchanged numbers with him. I just had a word with him last night. I told him कि आज का दिन मैं free हूँ. If he can take me to a few places here. There are a lot of places जहाँ पे मैं पहले गया हूँ and there are a lot of places जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ. जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ जगह है जो newly built up हुई है, कुछ new tourist spots है जो नया बना है अभी फिलहाल. So I have not gone to all those places. So car renting के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं. यहाँ पे बाइक्स नहीं चलाते, only the delivery boys, pizza delivery boys and वैसे लोग ही बाइक्स उनको अलाउ करते हैं. I really don't know. There are a lot of rules that have been changed. मेरे पास लाइसेंस था. When I was here in 2017, I had the license. मेरे से लाइसेंस कहीं खो गया. So I don't have the license. My sister has a car, but obviously license नहीं तो मैं चला नहीं सकता. अगर बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो 2 दिन का जेल है या कुछ 2 या 3 दिन का जेल होता है. I don't want to take that risk इसके लिए. I'm not traveling by my own car here. इसलिए मैंने टैक्सी लिया. So I'm just waiting for my taxi वाला to come. तब तक आप लोग ये टाइम लैप्स एंजॉय करो. So finally he's here. Musab is one of my subscribers now. Yeah. Musab is one of my subscribers and he is taking me to a few places here in Muscat. बहुत सारी जगह ऐसे जहाँ पे मैं गया नहीं हूँ, तो if Musab can take me there, मज़ा आएगा. इंशाल्लाह. So let's go. The name of this place is Al Bustan, and if you guys happen to come to Muscat, you have to visit this place. This is an amazing view. यहाँ पे sunset point है. वैसे यहाँ पे बाकी लोग sunset point बोलते हैं. यहाँ से sunset होता है तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे chill करने के लिए. There are people playing cricket. थोड़ी देर पहले कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे यहाँ पे. मतलब यहाँ का व्यू इट्स लाइक अ माउंटेन व्यू. जहाँ पे हम लोग थे वो काफ़ी नीचे था और वहाँ से काफ़ी ऊपर आना पड़ता है ये व्यू के लिए. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू. माई फ्रेंड हियर, he suggested me this place. Musab, thank you so much. هذه منطقة البستان في مسقط، في محافظة مسقط، وهي قريبة من المركز الرئيسي لمسقط، ولاية مسقط يعني بالضبط. فيها قصر البستان، هو فندق تقريبا 6 أو 7 نجوم. Okay. Next stop, Al Bustan Beach. beach behind me is Al Bustan beach.
If you are coming to Muscat, you can obviously search for the location. बहुत अंदर की तरफ है लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. And I'll advise you, if you guys want to come to this beach, it's either morning or evening. दोपहर के टाइम में नहीं आना. दोपहर के टाइम में क्लाइमेट कुछ ज़्यादा ही गर्म है, मतलब इतना गर्म है कि अपने ऊपर आइस बकेट चैलेंज कर लेने का मन करेगा. So the two things that I loved about this beach, first is the beach and second is just look at this beauty. It was and it will always be a dream for me to buy a car like this. It's beautiful, just look at it. कैसा लगा? So third stop for today is Sidab Street. So I remember coming to this place, Sidab Street, in 2017. So I remember coming to this place in 2017 with my sister and my brother-in-law and Junior, my nephew. We had come here during the night time. तो रात के टाइम पे इसका व्यू कुछ ज़्यादा ही अलग है. Very much beautiful and जिस तरीके से लाइटिंग्स वगैरह होता है रात के टाइम पे यहाँ पे, it is worth watching. It's a beautiful place. You can come here. So the name is Sidab Street. If you just want to type and find out where this location is exactly in Muscat. So all of this that you see is ये proper Muscat town है. You see this? It's a proper ship, but ये यहाँ पे it's a restaurant. ये ship के अंदर it's a restaurant. तो अगर आप लोग यहाँ पे आओगे, so you can go from यहाँ से बोट से लेके जाएंगे या वो साइड से बोट पे से लेके जाएंगे. And here is the entrance. You can go inside the restaurant.
एक ही छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है, फ्राइडे यहाँ पे तमाम चीज़ें बंद है. द वन दैट यू सॉ जस्ट नाउ इज अल जलाली फोर्ट. आई एम स्टैंडिंग राइट आउटसाइड द अल जलाली फोर्ट मेन एंट्रेंस. बंद है. बाहर से जो देखना है देख सकते हैं, अंदर जाके नहीं देख सकते. दैट इज़ अ प्रॉब्लम. आई एम गोइंग बैक टू द कार. नेक्स्ट लोकेशन. So we are right now in Sultan Qaboos Grand Mosque. Unfortunately ये भी आज फ्राइडे को बंद है. कुछ नहीं कर सकते. मुझे फ्राइडे को ही टाइम मिला, बाकी दिन में मेरे पास टाइम नहीं था. फ्राइडे को बंद रहता है. बट बाहर से देखना ही इतना खूबसूरत है. लाइक इट इज़ सो ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड. The best part about this mosque and the rest of the places here in Muscat is the way they have maintained it. क्या सही मेंटेन किया है यार, मतलब मान गए. It is amazing. Let's go. ये मुझे मेरे बाकी भाइयों की याद दिलाता है. फुल टाइम फ़ोन पे. और मस्कट में पता नहीं कितने टाइम के बाद बारिश हो रहा है. इट इज़ ड्रिजलिंग राइट नाउ. इफ़ यू गाइज नो, मस्कट में ज़्यादा बारिश होता नहीं है, बट काफ़ी टाइम के बाद हो रहा है. ठंडा लग रहा है एंड इट्स गुड. सो आई होप यू लाइक्ड दिस वन. दिस अ फनी इंसिडेंट. ये मेरे को बोल रहा है इतना बारिश हो रहा है, मतलब इतना जो थोड़ा बहुत ड्रिजल हो रहा है, वो बोल रहा है बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है, जल्दी गाड़ी में बैठता है. भाई तो मुंबई नहीं आना, डूब जाएगा. लेट्स गो. अभी बस बैठे बैठे डिसाइड किया कि आई थिंक आई शुड स्टॉप माई एक्सप्लोरिंग फॉर टुडे एंड गो बैक होम. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट रेनिंग एंड सेकेंडली लाइक आई सेड तमाम जगह आज बंद है. एंड सो वी बोथ आर जस्ट गोइंग टू स्टॉप बाय एट मैकडॉनल्ड्स. वील ईट समथिंग एंड देन Musab will drop me home. Finally back in my building, all thanks to Musab Omer for coming with me and taking me to a lot of places today. Yeah. Thank you so much. And it was very nice meeting you. I hope to see you next time when I come here, and I hope I have a friend now in Oman. Inshallah. So is there anything that you want to say? Thank you guys and see you again. I hope कि मुसाब को मैं वापस से ब्लॉग में नेक्स्ट टाइम जब मस्कट आऊँगा तब ब्लॉग में ऐड करूँ. इंशाल्लाह. See you guys. बाकी का मैं घर जाके बात करता हूँ. A few moments later. One eternity later. So finally I'm back home. मैं घर आते साथ पहले तो सो गया. 4 घंटे बाद ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ. So I just dozed off when I came back home. I hope
you liked today's video क्योंकि मस्केट का एक्सप्लोरिंग में इतना ही दिखा पाया बिकॉज आज फ्राइडे है, यहाँ की सारी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर क्लोज्ड, यहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे बंद रहता है, बट आई डिड नॉट नो टूरिस्ट स्पॉट वगैरह भी बंद रहता है. सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. आई होप नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम हियर आई गेट टू एक्सप्लोर मोर एंड आई कैन मेक सम मोर प्रोडक्टिव amazing video for you guys. And this is my Canon 80D. This is my new camera. I'm just trying to get used to this क्योंकि ये काफ़ी heavy है, इसके साथ vlog करना थोड़ा difficult है. अब तक I was vlogging with my phone and GoPro. So I hope next time when I come here I get to make some amazing videos here in Muscat, Oman, and if there are any other places I'll be traveling. I am leaving for Cochin right now. So I decided मैं आज रात को निकलता हूँ. 2:30 का flight है मेरा. I just have to pack my stuff right now. 2:30 का flight है. I'll be going to Kerala. I want to meet my brother. If you guys don't know what, I just want to meet my brother. Yeah. And then I'll be flying to Mumbai. Hectic इतना हो गया. I know videos बहुत ज़्यादा irregular हो गए हैं and I really want to apologize to all of you guys. It's either my laptop or my hard disk or something or the other that is delaying me from uploading videos. If anyone is waiting for my videos, I'm really sorry for that. I know मेरे subscribers ज़्यादा है नहीं, तो जितने भी है, जो लोग भी है जो जेन्युइनली वेट करते हैं, जो मुझे काफ़ी बार मैसेज करके बोलते हैं कि हम वीडियो आया क्यों नहीं इतने दिन से, एंड ऑल अदर, उन लोग के लिए आई एम रियली सॉरी. आई हैड टू कीप यू वेटिंग. प्लस माय वर्क दैट आई हैव, बहुत कम टाइम मिलता है वीडियो एडिट करके पोस्ट करने को. आई एम लीविंग फॉर कोचिन. आई विल मीट माय ब्रदर एंड देन आई विल गो बैक टू मुंबई. अगर व्लॉग बनने लायक हो तो मैं अपलोड करूँगा, और एल्स देयर विल बी नो व्लॉग्स, इट विल बी डायरेक्टली इन मुंबई. या दैट्स इट फॉर दिस video. I hope you liked Muscat, Oman. I hope you liked this video. If there's anything, please share your thoughts on the comment section below. अगर अच्छा लगा तो like करना and subscribe कर दो. अच्छा लगता है if I have more subscribers. It's motivating me to do a lot of work. It is motivating me to make more videos for you guys. So subscribe नहीं किया तो subscribe कर देना, और अगर subscribe किया है तो subscribe करने के लिए thank you, and thank you for watching this video. I'll hopefully see you next in either Cochin or directly in Mumbai.